warm welcome to all of you to the National Conference on Millets, the future superfood for India, brought to you by ASSOCHAM. I am Anisha Nair Dhawan, your host for the day. It is my honor and privilege to welcome all of you to the conference today, where we are going to explore the exciting opportunities in the field of food processing, where we will not just be aping the West blindly, but will try to rediscover our roots. For an uninterrupted and enjoyable experience, once again, I would remind all of you to put your phones on mute so that there is no disturbance during the conference. If there is an urgent call that you need to take, I would request you to please step outside the hall and take your call. We will be having regular breaks. So we have a tea break, we have a lunch break. You will have ample opportunities to catch up with your friends and your peers and your contacts here. So I request you to please be seated and clear the aisles, keep the aisles clear. And I request you to raise your hand, identify yourself and ask your questions. We are very, very honored and privileged to welcome our chief guest, the Honorable Minister of State for Food Processing Industries, Government of India, Shri Prahlad Singh Patel. Please put your hands together and welcome our chief guest. I would request our chief guest to please proceed towards lighting of the lamp, and I would request our dignitaries who have come today to join him in lighting of the lamp and starting this conference on an auspicious note. I would request our Chief Minister, Shri Prahlad Singh Patel, to please light the lamp. I would request our other dignitaries, Shri Millets Alam, Joint Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Government of India, Shri Bhupesh Chaudhary, Special Commissioner of Industries, Department of Industries, Government of National Capital Territory of Delhi, Shri Ram Singh Rathwa, Chairman TriFed, Shri Vivek Chandra, Chairman Food Processing and Value Addition Council, ASSOCHAM, Shri Tarun Vich of GAIN, and Shri Arun Om Lal of the co-chairman of the Food Processing and Value Addition Council, ASSOCHAM, to please light the lamp. The light of the lamp leads us from darkness towards light. The flame symbolizes wisdom and knowledge. Knowledge removes ignorance just as light removes ignorance. Thank you all for initiating this auspicious beginning to the conference. May I request all our dignitaries to please take their seats on the dais. I would like to welcome the Honorable Minister of State for Food Processing Industries, Government of India, Shri Prahlad Singh Patel, to please take his place on dais. I would also request our other dignitaries to please join him on the dais. Shri Millets Alam, Joint Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Government of India. Shri Bhupesh Chaudhary, Special Commissioner of Industries, Department of Industries, Government of NCT, Delhi. Shri Ram Singh Rathwa, Chairman, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TriFed. Shri Vivek Chandra, Chairman, Food Processing and Value Addition Council, ASSOCHAM, and CEO, Global Branded Business, LT Foods. Shri Tarun Vich, Country Director, India GAIN, and Shri Arun Om Lal, Co-Chairman, Food Processing and Value Addition Council, ASSOCHAM, and President, Corporate Affairs and Communications, Hexagon Nutrition Limited. We are very honored and privileged to have our esteemed dignitaries joining us. So I would request Shri Vivek Chandra, Chairman, Food Processing and Value Addition Council, ASSOCHAM, to please present a small token of our appreciation and gratitude to the Honorable Minister of State for Food Processing Industries, Government of India, Shri Prahlad Singh Patel, for gracing us with their presence.
I would request Shri Vivek Chandra to also present a bouquet to Shri Ram Sen Ratwa, Chairman Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TriFed. I would now like to request Shri Arun Omlal, Co-Chairman, Food Processing and Value Addition Council, ASSOCHAM, to please present a bouquet to Shri Minaj Alam, Joint Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Government of India. I would request Shri Arun Omlal to please present a bouquet to Shri Bhupesh Chaudhary, Special Commissioner of Industries, Department of Industries, Government of National Capital Territory of India, of New Delhi. Thank you. Now, let me start by asking a pop quiz. Who all here have heard of superfoods? Raise your hands. Who has heard of superfoods? We've all heard of fast foods. How many of us have heard of superfoods? Okay, a small, okay. There are a few people who've heard of superfoods. Now, superfood is a nutrient-rich food considered to be especially beneficial for health and well-being. So far, most of these superfoods are those which are popular in the West, are hard to find locally, and are not affordable for a majority of our population, especially foods like avocado, goji berries, acai berries, or grapefruit. So, are we doomed to be stuck with less nutritious empty calories? Not if we can help it, not if our farmers and the food industry in our country can help it. Millets like ragi, jowar, bajra, chena, traditionally grown in a number of states in our country, can become our very own homegrown superfoods and fulfill the country's nutritional needs. So when we have this treasure in our own backyards, why have we been looking westwards? Now, data shows that production of millets has steadily dropped at a rate of 2.25% compounded annual growth rate between 2000 and 2019. So if millets are superfoods, why are we not eating them? Why are we growing less of them? Can food processing increase the shelf life of millets and make them more palatable? Do we need more policy reforms to incentivize farmers to produce more millets? Now, nutritious food is a fundamental need of our country and our people. To address this subject, which is of national and international importance, ASSOCHAM is organizing the National Conference on Millets, Future Superfoods in India. Today, we have a gathering of food industry leaders, scientists, farmers, organized agriculture, civil society, government, policymakers, and private sector, as well as NGOs, to discuss and share experiences on the successes of millets and to deliberate the challenges to nutrition through food with a special focus on innovation, marketing, and palatability. Now, to kick off the discussion, I would request Shri Vivek Chandra, Chairman, Food Processing and Value Addition Council, ASSOCHAM, and CEO, Global Branded Business, LT Foods, to please give the welcome address and tell us about the exciting things that are lined up for the day today. Please welcome Shri Vivek Chandra. Good morning. It really is delightful to see a full hall after a hiatus of about 3 years when we could not meet physically. And it really is, this conference is really the right start to this event. So first of all, my very warm welcome to all of you. Thank you for being here today. Thank you for supporting this initiative. Let me start with a quote from the American novelist Kurt Vonnegut, who said, "You can't just eat good food. You've got to talk about it too. And you've got to talk about it to somebody who understands that kind of food." That is so apt for the gathering here, who is collected here to not only talk about the future superfood, but is knowledgeable.
I'm at the right place to discuss and talk about this. And I really, before I start, I want to congratulate ASSOCHAM for organizing this, ASSOCHAM for pulling this together, and for creating this agenda that is about taking millets forward. I would also like to thank Ministry of Food Processing Industries for their support and their kind help to ASSOCHAM in organizing this national conference on millets. Thank you, sir. Ministry of Food Processing Industry is helping to enable the vigorous ecosystem for the agro-food businesses and keeping the industry stakeholders always associated with them. I'm delighted and honored to have the participation of such an eminent panel here and like to take this opportunity to welcome all the dignitaries on the dais. First and foremost, I'd like to welcome our chief guest, the Honorable Minister, Shri Prahlad Singh Patel, Minister of State for Food Processing. Thank you, sir, for being here today with us. I would like to welcome Shri Ram Singh Rathwa, Chairman of TriFed. Sir, Shri Minaj Alam, Joint Secretary, MOFPI. Shri Bhupesh Chaudhary, Department of Industries, NCT. Shri Tarun Vij, Country Director, GAIN. And last but not the least, the person who works tirelessly with the council and is the co-chairman, Shri Arun Omlalji. As we are all aware about the purpose of today's conference is to align, to discuss and share our viewpoints in leveraging and strengthening the segment of millets, and to realize its importance in the food processing industry. More focus should also be given to strategize the popularization of millets and millet-based food products amongst the Indian palate. This is not something that as a palate we recognize, and so work would need to be done in getting it to be accepted as part of our daily diet. We need to focus on utilizing millets as a crop and a commodity which will have benefit for all the stakeholders, whether they are farmers or consumers or industry players, or it is to do with environment and sustainable agri-practices. As you all know, millets have a very high nutritional qualities, and they produce well under marginal and severe conditions in agriculture. But they're not grown to the extent that is possible. Major millets, including sorghum, pearl millets, fox millets, are all rich in minerals and vitamins compared to other staples. With all such intrinsic quality, millets are known as the miracle grain or now nutri-cereal. Including millet crops in a concerted way in cropping systems, and particularly in fragile and severe ecosystems, can really contribute to sustainability. Also, emphasizing on investing on marketing and value addition improves millet cultivation. One of the themes today is about the value chain. And I strongly believe that it is not just the focus on cultivation which will develop millets, unless we take it all the way up to the consumer through innovation, through food processing, it will not realize its potential. The Department of Agriculture and Farmer Welfare is implementing a submission on nutri-cereals under National Food Security Mission to enhance the area, production and productivity of millets, including bajra. Under this submission, pearl millets or bajra is being promoted in 89 districts of 9 states, including 14 districts of Gujarat. Northeastern states, Himachal Pradesh, and the Union Territories of Jammu, Kashmir, and Ladakh have been given flexibility to include the districts under this program. Through the efforts made by the government, the production of millets has increased from 14.5 million tons in 15-16 to close to 18 million tons in 2021. It is right to say that our nation calls for the millet revolution and bringing back the grain of yore back to our plates. In the past few years, millets have been making a return.
The Ministry of Food Processing Industries, the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, and Niti Aayog are taking initiatives to bring millets into the perspective of national importance and escalation to speed up its availability, just like the other staples. Millets require a very specific way of processing after harvesting to capture its benefits. So conveying the nutritional value of these grains would require the unbleached and natural processing of these grains. The processing machines, processing centers, and skill development in the processing of grains still needs to be worked on and needs to be taken up both as a priority and as a policy and with incentives and supports. Food processing has the capacity to have solution-driven approaches to harness nutritional and food security. Our various local varieties of crops, coarse grains, along with millets, have very high nutritional value. These can also be grown in unfavorable agroclimatic conditions. The emphasis should now be given to identify opportunities and to work on them in an order to have an enterprise entirely based on millets. This will generate revenue for our farmers. These products will do well in the one district, one product scheme to get popularized globally. And as we said, millet can grow in adverse or in low maintenance, and it is a drought-resistant grain, so it needs lesser water. It has been used in the past to feed livestock, but it needs to move now more into consumer interest. It was called the coarse grain, now has been designated as a nutri grain or a superfood. It provides various health benefits. National Year of the Millet, celebrated in 2018, gave it the fillip and the start to where it is today. And it is impressive to see that proposal of India was supported by 72 countries and the United Nations General Assembly in declaring 2023 as the International Year of Millets. And now, while I summarize here and would hand over to the others to work as a think tank on how do we do this best and how do we achieve our common goal, I believe the themes that we have today are right. Focus is on strengthening value chain, as focus on cultivation alone is not enough. Integrated approaches, some of which were piloted like in the MP Dindora project, will be needed, which cover the whole value chain. If millet has to become part of our regular diet, there is need for recipes, there is need for processed food that can make it so. As it stands, it is not going to be incorporated in our diets, but the beginning has been made for that. And now how do we take that further would be another big discussion, which is the second theme that we have for today. Food processing will play a very big role in increasing consumption of millets. Millets, PLI, an initiative which is being led by the ministry, and Mantriji, we really thank you for that initiative on the millets PLI. But we must recognize, from green revolution to millet revolution is a good theme. We must recognize that when green revolution started, the need of the country at that time was to fight hunger, was to give food. Today, as a result of that, 60 years on, we are a food surplus nation. We are a nation who is a superpower in exports of rice. When we touched $50 billion record rice export, a quarter of that came from rice. Basmati alone earns for the country about 40,000 crores in foreign exchange. So these are some very impressive achievements for the nation. When the green revolution started, it had its purpose. Today, the need is not to fight hunger. The need is, as the experts say, to fight hidden hunger. There have been strategies like fortification, like biofortification,
And millets is going to play a very big role in that. So we should see this entire efforts on millet as something which is complementary, as something which builds on what we've achieved. And how do we take that at the same level as we've got staples? This is really, I think, what I would look to and hope to achieve in our discussions today. Once again, I welcome you all. Thank you for being here and for listening patiently. And I really, again, welcome all the dignitaries, all the speakers here today, and we hope we'll have a good, productive day. Thank you again. Thank you, Chandraji. I would now like to request Shri Ram Singh Ratwa, Chairman, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited, TriFed, to please give his special address. Please put your hands together and welcome Shri Ram Singh Ratwa. सभी को प्रणाम। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित और हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हमारे पुराने साथी और अभी भारत सरकार के मंत्री महोदय सम्मानीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम्मानीय श्री तरुण विजी, कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया, सम्मानीय श्री भूपेश चौधरी जी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, सम्मानीय श्री मिनहाज आलम, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम्मानीय तरुण ओमलाल, को चेयरमैन, फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन काउंसिल, सम्मानीय श्री विवेक चंद्र, चेयरमैन, फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन काउंसिल ऑफ एसोसिएशन, सम्मानीय सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। मैं देख रहा था पूरा विषय, एक समय वो था कि जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो खान पान और रहन सहन है, उसके पहले को भी कोई ध्यान नहीं दिया है कि वो लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या कैसे रहन सहन है, कैसी हालत में जीते हैं, और उनका जो खान पान है उसके बारे में कुछ जो सम्मानीय जानकार है वो भी उनको बाहर लाने की कोशिश जितना करना चाहिए इतना किया नहीं है। और जब हम जानते हैं और जब हम धीरे धीरे वो फूड हमारे सामने आ गया, पिज़्ज़ा और बर्गर और ये सब जब सामने आया, उनकी ज़्यादातर हम तारीफ करते हैं। और हमारे पास जो ऐसा फूड है जिसमें लौह तत्व भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, सभी तरह का जो हमारे शरीर को चाहिए वो प्रोटीन हमें देता है, ऐसे दान के ऊपर हमारा ध्यान गया नहीं है, या उनके प्रति हमने
ज़्यादा जागरूकता भी पैदा नहीं किया है, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है। आप सभी का तो ऐसा मानना नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूँ। और जब आज मिलेट्स के बारे में जब हम बातचीत कर रहे हैं और हम पूरे अभी का जो कालखंड है, वो कालखंड में धीरे 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 पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। और जो धान हमारे लिए जो पैदा होता है, वो धान ज़्यादातर चावल या गेहूं, और उसके बारे में बहुत पानी की ज़रूरत है। उनके सामने जो मिलेट्स है वो कम पानी में तैयार हो जाता है। उनको कभी ऐसी दवाई डालना नहीं पड़ता है, ऐसा खाद नहीं डालना पड़ता है, कम पानी में तैयार हो जाता है। और न दवाई और न खाद के बगैर ये जो धान तैयार होता है, ऐसा बहुत सारा धान जो है, जैसे मिलेट्स और चना, जैसे अभी बातचीत कर रहे थे, वैसे चना, रागी, नागली, भेदी, सामेल, ये बहुत सारा जो प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारा लौह तत्व समाया है, उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। और अभी जब उनकी चर्चा होती है तो हमें पता चलता है ये हमारे सामने कितना इम्पोर्टेंट धान था, कितना अच्छा धान था। उसके बारे में हम लोगों के बीच में ले जाने के लिए इतना ज़्यादा प्रयास नहीं किया है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारी मिनिस्ट्री को, और ASSOCHAM को भी आभार प्रकट करता हूँ कि ये बात लोगों के सामने ला के, ऐसा एक सेमिनार करके लोगों के प्रति और ये मिलेट्स के प्रति एक जागरूकता का प्रयास किया है। हालांकि भारत सरकार ने अभी अभी बहुत सारा कुपोषित बच्चों को और कुपोषित को पोषित में लाने के लिए मेहनत कर रहा है। और उसके लिए मैं भारत सरकार और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने काफ़ी कदम ये उठाया है। भारत में वैसे कृषि 40% कार्यबल को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था के उत्पादन का 80% हिस्सा है। भारत फल फूल और उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वो दूसरे नंबर पे है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं हमारे देश के जो 5 साल से कम उम्र के लगभग 38% बच्चे अविकसित तथा 35% बच्चे कम वजन के होते हैं। भारत दुनिया के 1/3 कुपोषित युवाओं का देश कहा जाता है। अभी धीरे धीरे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उनको बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे मंत्री जी ने भी काफ़ी उस विषय पे आगे काम कर रहे हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्था पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच में बोलते हुए 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा को बताया है। भारत ने पिछले 45 वर्षों में कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न पोषण कार्यक्रम लागू किया है। भारत ने एकीकृत बाल विकास सेवा और ICDS के निर्माण के साथ साथ मध्याह्न भोजन योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए माध्यम से देश की पोषण स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने
आईसीडीएस के तहत पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवा योजना और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सहित कई अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी पहल शुरू की है। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय बाजरा की ब्रांडिंग के लिए एक नीतिगत प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी रखा है, जो अनाज या नाश्ते में बिस्कुट और स्वास्थ्य स्नैक सेगमेंट में प्रमुख तत्व है। मिलेट्स विटामिन, खनिज और आहार का फाइबर का एक संपूर्ण स्रोत है। मैं एसोचेस और पोषण असुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को इस विषय के साथ सभी के सामने रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया। आप सभी का, ये प्रोग्राम करने वाले सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूं। आप मेरी बात को धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rathaji. I would now like to invite, as my honor and privilege, our chief guest, Shri Prahlad Singh Patel, the Honorable Minister of State for Food Processing Industries, Government of India, to please give the inaugural speech. Please put your hands together and welcome Shri Prahlad Singh Patel. द फ्यूचर सुपरफूड ऑफ इंडिया नहीं वर्ल्ड। मैंने बोला है कि इसको बदलिए, क्योंकि जब फ्यूचर की बात आएगी तो देश के सामने नहीं, दुनिया के लिए ये सुपरफूड होगा। हमारा तो सुपरफूड था। मैं मंत्रालय की तरफ से मेरे वरिष्ठ साथी और अभी ट्राइफेड के चेयरमैन हैं, 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय राम सिंह जी राठवा, श्री विवेक चंद्रा जी, चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन काउंसिल एसोचैम, तरुण विज जी, भूपेश चौधरी जी, मिनाज आलम जी, अरुण लाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक कुछ वर्ष पहले जब ये दुनिया ने फैसला नहीं किया था कि अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक कृषि और फूड प्रोसेसिंग और सिविल सप्लाई के कार्यक्रम में अपनी बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि भारत को पौष्टिक आहार और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मुझे कई बार लगता है कि हमको देश का ऐसा नेतृत्व प्राप्त है जो घटने के बहुत पहले से भांप लेता है और चेताने की और जगाने की कोशिश करता है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो आंकड़े हमारी गति को इंगित भी करते हैं और साफ संकेत देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोगों की मैं पूछ रहा था कि कौन लोग हैं, और मैं मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते जब मैं ये कहता था कि अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष दुनिया के सामने होगा, हम एक बड़े उत्पादक देश हैं जिसमें दुनिया के मोटे अनाज की हिस्सेदारी कहते हैं लगभग 40% तक रही है। मैं इस आंकड़े पर इसलिए अंदाज के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं सहमत होते हुए खुद दिखता नहीं, और इसलिए मैं पहली बात ये कहता हूँ, क्या हमारा उत्पादन दुनिया के मोटे अनाज में हमारी भागीदारी अगर 40% है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए आने वाला समय एक स्वर्णिम समय है।
लेकिन उसका जो दूसरा चरण है कि यदि हम प्रोसेसिंग के बारे में बात करें कि मोटे अनाज की प्रोसेसिंग करने वाला क्षेत्र या जो सप्लाई चेन पूरी करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा ईमानदारी से पलट कर देखिए और तय करिए क्या ये सच्चाई है कि हम दुनिया की मांग को पूरा कर सकते हैं। मैंने जब सूची बनवाई तो जो आंकड़ा मुझ तक प्राप्त है, अगर करेक्ट कर सकते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तक कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो ज़रूर देकर जाइए। मुझे कुल 99 इंडस्ट्रीज़ की सूची मिली और इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी मैं नहीं मानता। और इसलिए अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल है तो फूड प्रोसेसिंग के बाद मिनट्स के क्षेत्र में अगर हमने उसको प्रोसेस कर नहीं दिया तो हम दुनिया की डिमांड को पूरा करने में कितनी हिस्सेदारी करेंगे। तीसरी बात होती है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो दुनिया में यहाँ से खरीद कर सप्लाई करते हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कि ज़रा एक बार तय तो करिए कि आप जितना भारत की धरती पर उत्पादित होता है, चूँकि आपने कोई क्वालिटी पैरामीटर्स बनाए होंगे, जो भी मार्केटिंग के आपके प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहाँ से जितनी आप खरीदी करते हैं वो उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तब कहीं जाकर हम एक सटीक टारगेट पर होंगे। शायद हम अगले साल जो हम लक्ष्य तय करें उसे प्राप्त कर लें तो बेहतर होगा, तब कहीं जाकर आगे हम बढ़ाने की बात करेंगे। ये सब कुछ चुटकी बजाने से नहीं हो सकता। लेकिन पिछले बजट में प्रधानमंत्री जी ने कहा था और जो अनुमान था, क्योंकि ये अनुमान इसलिए कह रहा हूँ कि 24 लाख अगर लघु उद्यमी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो उन्होंने कहा कि कम से कम भाई 2 लाख वो समूह होंगे, कोई व्यक्ति होगा, कोई छोटी इंडस्ट्री होगी, उनमें से कम 2 लाख लोगों को तो छांटिए जिनको 10,000 करोड़ देकर हम उनको अपग्रेड कर सके। आप 24 लाख के आंकड़े को कागज में कहते रहिए, लेकिन परिणाम क्या निकलने वाला है उसका। और इसलिए जो चीज़ें दुनिया में बिकनी हैं, और इसलिए जब कभी हमने PIL स्कीम इस वर्ष से लागू हुई है उसमें भी हमको 10,000 करोड़ खर्च करने हैं और देश के उन उद्योगपतियों को जो रेडी टू ईट के मामले में दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मादा रखते हैं उनको सरकार मदद करेगी। दूसरी कैटेगरी है कि अगर वो इनोवेटिव और जैविक के क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको मदद मिलेगी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में 50% की मदद मिलेगी, क्योंकि दुनिया में हमारा खान पान पसंद किया जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी कोई भी भारतीय कंपनी अभी तक दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकी, बिस्किट को छोड़कर। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं कि हम इस अवसर का लाभ कैसे उठाएंगे। लेकिन अगर कोई करने वाला हुआ तभी तो उसको लाभ मिलेगा। भारत सरकार आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग में, आपके अगर कोई आप इनोवेटिव या ऑर्गेनिक सेक्टर में कोई बेहतरीन आप प्रोडक्ट पैदा करते हैं तो उसमें आपको मदद करने के लिए तैयार है। रेडी टू ईट दुनिया की डिमांड है। अगर वो मोटे अनाज की तरफ है तो फिर आपको और पीछे जाना पड़ेगा। जो मैंने आपको आंकड़ा बताया वो सिर्फ 99 है। आप एक तरफ 2 लाख इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लघु उद्यमियों की, कि आप उनको अपग्रेड करके दुनिया के कंपटीशन में खड़ा करना है। उससे ऊपर PIL स्कीम है जिसमें बड़े उद्योगपतियों को मैं दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाकर भारतीय कंपनी के तौर पर पहचान दिलानी है और सरकार उसमें मदद करेगी। मुझे लगता है कि इस विभाग में से बेहतर कोई दूसरी मिनिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तो कुछ करना नहीं है। हमें जो करने वाला, उत्पादन करने वाला किसान हो, कोई सोसाइटी हो, FPO हो, हमारा कोई ग्रुप हो, इंडस्ट्री हो, उद्योगपति हो, हमारे सामने कोई बैरियर नहीं। हमें तो सिर्फ उसको मदद करनी है जो इस सेक्टर में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसलिए ग्रोथ के इस स्पीड को हमें देखना होगा। हरित क्रांति के बाद हमारे उत्पादन को बहुत बड़ा झटका लगा है मोटे अनाज की। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ तो मैं टिप्स पे जानता हूँ जिन चीज़ों को मैंने खाया या मैंने देखा, और उसमें बड़े सिंपल तरीके से ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, आदिवासियों के क्षेत्र में कोदो है, कुटकी है, समा है, आपके जो एक बंगाल में बहुतायत में होता है, हमारे यहाँ जवा बोलते हैं, वहाँ पर जो बोलते हैं उसका बाकी कोई लोग वाइन में उपयोग करते हैं, कोई लोग हवन में उपयोग करते हैं, कोई लोग खाने में उपयोग करते हैं। रागी है। अब रागी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक सारे राज्यों में होती है।
उनके नाम अलग हो सकते हैं, गुजरात तो उसका बड़ा सेंटर है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जब हम आंकड़े उठाकर देखते हैं तो वो जो आंकड़े हैं, बाजरा के मामले में तो हमने निश्चित रूप से बढ़त हासिल की है, लेकिन जो आंकड़ा मैं देख रहा था वो आपकी जानकारी में हो तो शायद डिस्कशन को दिशा ठीक ढंग से मिलेगी। अगर हम 2015 और 16 की बात करते हैं तो मोटे अनाज का जो उत्पादन था वो 14.52 मिलियन टन, 2021 में बढ़कर वो 17.96 टन मिलियन टन हुआ है। लेकिन बाजरा में हमने इसमें उछाल दी है, मुझे लगता है ये आंकड़ा इसलिए बढ़ा है, इसलिए बाकी सेक्टर्स को इसमें कंपेयर करने के लिए हमें नए सिरे से आंकड़े को देखना होगा। जब मैं बाजरा का देखता हूँ तो 8.07 मिलियन टन से बढ़कर 10.86 मिलियन टन, तो जो ग्रोथ मुझे लगती है वो सिर्फ बाजरा में लगती है। लेकिन दुनिया की डिमांड सिर्फ बाजरा नहीं है। अगर दुनिया की डिमांड रागी है तो पर हमें रागी के सेक्टर पर फोकस करना होगा कि उत्पादन उसका उतना हम कर पाएंगे कि नहीं, उसको उतना प्रोसेस कर पाएंगे कि नहीं, उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री हमारे पास है या नहीं, फिर उसके बाद मार्केटिंग के लिए हमारे पास में सप्लाई चेन है या नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि सप्लाई चेन हमारी सबसे मजबूत होनी चाहिए, और कोरोना के समय उनके दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम था कि हम उस सप्लाई चेन को सक्सेसफुली पूरा कर पाए। और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ने 2-3 और बड़े परिवर्तन किए। पहले हम सिर्फ टॉप स्कीम पर रहते थे और इसलिए मैं उसमें आलू, टमाटर और प्याज ही होता था, लेकिन हमने उसको टोटल करके फलों का, सब्जियों का, समुद्री उत्पादों को बढ़ा दिया। लेकिन आज जो रिलीवेंट बात वो है कि PIL स्कीम में जो चीज़ें बची हैं, क्योंकि अगले वर्ष हमको अपनी उस चुनौती का सामना करना है और उसमें हमने अवसर को छोड़ना नहीं है, इसलिए PIL स्कीम में जो बचा हुआ धन है लगभग शायद 800 करोड़ का, बिना जालम उसका सही आंकड़ा आपको देंगे तो डिस्कशन में ज़्यादा बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि मिलेट्स की इंडस्ट्री को इसी पैरामीटर्स के आधार पर इस पैसे को दे के अगले वर्ष की जो डिमांड है उसको बीट आउट करने के लिए हम, या उसको उस लक्ष्य को पाने के लिए हम काम करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है और तब मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस की सफलता हमारे लिए ठीक होगी। और मैं मानता हूँ कि 2023 दुनिया के सामने जो चुनौती बनकर आया है, वो चुनौती से कम हम तो परिचित हैं। जो बात राम सिंह जी कहना चाहते थे शायद संकोच में नहीं कह पाए, वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, और मुझे लगता है कि जिन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते हैं उससे अच्छा है कि आप किसी उत्पादक को देखिए और किसी उसके पूरी तरह से खान पान के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति के जीवन को देखिए। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह है डिंडोरी, वहाँ पर बैगा आदिवासी रहते हैं, उनके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते और वो कभी भी मिलेट्स के अलावा दूसरी चीज़ का उपयोग नहीं करते, और उनमें इस प्रकार की, जबकि वो विलुप्त तो प्राय प्रजाति की मानी जाती है, और इसलिए आदिवासियों के जीवन में मिलेट्स के अलावा कुछ था नहीं। हमने अपनी जीवन पद्धति को जिस ढंग से बनाया, बिगाड़ना शब्द मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस में ठीक नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि हमने कुछ चीज़ों को जिस तरीके से लिया उसको ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हमें किसी और को कोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सुपर फूड था, ये हमारा सुपर फूड है, और ये सुपर फूड बनेगा। दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तत्पर है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें, खान पान की बात करें, उसके तरीके की बात करें, उसके बाकी क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं जो आज मानव शरीर को नुकसान करता है, वो सारी चीज़ें इनमें नहीं हैं। जैसे ग्लूटेन कहेंगे तो उनमें 0% मिलेगा, बाकी जो चीज़ें शरीर को और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं वो इसमें नहीं है जो हम उत्पादन करते हैं। लेकिन उस खान पान को हमने छोड़ा, किसी और ने हमको नहीं कहा। और इसके लिए एक कहानी मुझे याद आती है जो मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए। एक बार दक्षिण अफ्रीका में एक पहाड़ी पर एक गांव बसता था, वहाँ सारे लोग अंधे थे, मुझे सत्य घटना भी है। तो बाद में कोई बच्चा पैदा होता था, उसकी आंखें होती थी लेकिन बाद में वो अंधा हो जाता था। कहते हैं वहाँ एक मक्खी थी जो काटती थी, उसके कारण से ये परिस्थिति बनती थी। जब लोगों को पता चला तो लोग वहाँ पर गए और जाकर उनको कहा कि भाई यहाँ से आप विस्थापित होकर कहीं और रहिए, क्योंकि ये तो
यहाँ का रोग नहीं है, किसी मक्खी के कारण ये परेशानी पैदा हुई है। लेकिन जिनने पीढ़ियों से आँखों प्रकाश देखा ही नहीं था, उनको बहुत प्रकाश की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, उनको कन्वेंस करने में ही बरसों लगे, लेकिन वो बाद में माने और बाद में वो परिस्थिति से बाहर आ गई पीढ़ी, उसकी जो बात की पीढ़ी थी। तो शायद ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ है। हमारे पास में जिस सुपर फूड हम लेते थे, वो कोई ये आधुनिकता की मक्खी जिसमें राम सिंह जी कह रहे थे अपना पिज्ज़ा बर्गर, या हमने बाकी चीज़ों को स्वीकार किया। गेहूँ हमारे यहाँ बहुत पुराना नहीं है, दालें बाकी चीज़ें हमारे खान पान में थी। अगर इसी हिस्ट्री को देखेंगे तो हम किसी अन्य परंपरा को कोड ही नहीं करेंगे, और हम ये बता पाएंगे कि हमारे मनीषियों के द्वारा जो तय खान पान था वो मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च था। आज हम एक तरफ से जो आंकड़े देख रहे हैं, जो राम सिंह जी ने बताए हैं, आप 50 साल की उम्र से ज़्यादा के स्वस्थ व्यक्ति के बारे में अगर आपको मिलता है कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, तो आप थोड़े विस्मय के साथ देखते हैं ये भारत की हालत है। लेकिन इसके पहले नहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि हम कभी खान पान के मामले में, कम से कम भारतीय खान पान के मामले में, हम कह सकते हैं कि हमारा खान पान ज़्यादा शुद्ध था। हमारा खान पान मनुष्य के लिए और अन्य जीवों के लिए भी, इवन पशुओं के लिए भी, हमारे खान पान में वह चीज़ें उपलब्ध थी जो उनके द्वारा हमें मिलती थी। अगर दूध हमें मिलता था तो वो हमें ताकत देता था, हमको रोग नहीं देता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब मैं मनुष्य के अलावा खान पान की बात करता हूँ पशुओं के, तो जो दूध आपको आज मिलता है तो आप भी 10 बार सोचते हैं कि मुझे दूध कहाँ से लेना चाहिए। तो मुझे लगता है लेकिन वो स्वास्थ्य से और खान पान से जुड़ी महत्वपूर्ण एक हमारी ज़रूरत है। और इसलिए इस अवसर पर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे सामने जो लक्ष्य होना चाहिए वो अगले वर्ष दुनिया में जो डिमांड है, जो मांग है, उसकी पूर्ति का सामर्थ्य हम में है या नहीं है। वो उत्पादन के साथ जुड़ेगा, वो प्रोसेसिंग के साथ जुड़ेगा, वो सप्लाई चेन, अगर हम निर्यात करने की सामर्थ्य हम में नहीं होगी तब भी हम नहीं कर सकते। फिर हम मार्केट में ज़रूरत, डिमांड कहाँ पर है, किन चीज़ों की है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ हमारा कोई टाई अप है क्या, मंत्रालय का, इंडस्ट्री का, तो पर होगा। निर्यात करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि जब हम जैविक की बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में, तो मोटा अनाज जहाँ पर भी होता है, अगर आप हाइब्रिड की बात ना करें तो उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो जैविक ही होगा, ये बात आप मानकर चलिए। क्योंकि वो हल्की ज़मीन में होता है, कम पानी में होता है। हम पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, दुनिया को और बेहतर बनाने की दृष्टि से देखें, सभी मामलों में ये सुपर फूड है और सुपर फूड की अहमियत को हमें समझना होगा। अंत में मैं इस कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि विवेकानंद का और रामकृष्ण परमहंस का नाम सबने सुना है। उन्होंने कहा कि जाओ देवी के पास जाकर अपनी बात कहो जो तुम्हें चाहिए। वो एक बार गए, लौटकर वापस आ गए। उन्होंने कहा इधर छोटी मोटी चीज़ क्या मांगना है। दूसरी बार गए, वापस आ गए, तीसरी बार गए, तब भी वो वापस आ गए। उन्होंने अपने गुरुदेव को कहा कि मैं क्या मांगूँ। तो जो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद मेरी बात को भी पुष्ट करता है, हमारे पुरखों की बात को भी पुष्ट करता है। उन्होंने कहा जाओ, दुनिया में जाना, तुमको कभी मोटे अनाज और मोटे कपड़े की कमी नहीं पड़ेगी। वो अनाज भी कह सकते थे, लेकिन किसी साधु का भोजन या तो फलाहार होगा या मोटा अनाज होगा। हमारी किसी भी परंपरा में कह रहा हूँ, उस परंपरा में मोटे अनाज का की हिस्सेदारी ही रही है। ये सच है कि किसी नूतनता की चाह में, मेरे एक मित्र ने एक मुझे पत्र में लिखा था, वो दुनिया में नहीं है, उसकी आखिरी पंक्ति थी कि दुनिया सदैव पुकार मचाएगी नूतनता नूतनता नूतनता। हम नएपन से इतने प्रभावित होते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जिसको हम खराब मानते हैं ये उससे भी बद से बदतर है। लेकिन तब तक समय गुजर जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हमारे ऋषि परंपरा हो या कृषि की परंपरा हो, दोनों में कोई भेद नहीं रहा। दोनों का साम्य इतना था कि कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा के बीच में कोई गैप नहीं था। अब दुर्भाग्य से जो कृषि परंपरा आज हमने स्वीकार की है,
उसमें वैज्ञानिकता के साथ हमने खाद और औषधियों को मिलाकर ऋषि परंपरा को तो ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि जो प्रकृति को नुकसान करे वो ऋषि परंपरा नहीं हो सकती। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ऋषि और कृषि परंपरा में कहीं पर भी ये संकट नहीं है। लेकिन बदलते दुनिया के परिवेश में अगर दुनिया मानती है कि वो मोटे अनाज को स्वीकार कर रही है, तो एक बेहतरीन अवसर हमारे पास में है कि हम उसमें हिस्सेदारी करें, भारत की उपस्थिति को दर्ज कराएं। दुनिया की मांग की पूर्ति के अगर हम कारक बनते हैं तो ये बेहतरीन अवसर होगा इस चुनौती में अपना स्थान बनाने के लिए, हमारी परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए। देर से आएंगे लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर भी कर पाएंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दिशा देंगे और दुनिया को भी दिशा देंगे। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। Thank you, sir. Indeed, let's hope India will give superfoods in form of millets to the entire world and fulfill the nutritional needs of our country as well. We would like to thank the Honorable Minister for taking the time out and coming here today and sharing with us his views and his thoughts on the way forward to make millets more popular in our country. We thank you, sir, for your presence here, and we are very grateful that you could take the time to come here. I would request all of you to please put your hands together in gratitude for the minister coming here and sparing his time and speaking with us. As we all are aware that it is a very busy day for our ministers in office, and the minister has taken the time to come here. So we are very, very grateful to him for coming here. And we are grateful that he is here, and at this point of time we are happy to have him with us here. So we will close the session here and we will take a very short break and resume in another 2 minutes. I request all of you to kindly stay in your seats and please put your hands together for all our dignitaries on stage here. I request all of you to please take your seats. We'll resume very shortly, so please be seated. Of Shri Ram Singh Rathwa, the Chairman, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited, TriFed, and the Honorable Minister of State for Food Processing Industries, the Government of India, Shri Prahlad Singh Patel, who has outlined the vision that the government has for making millets the superfood in our country and making India an export hub for millets as well. We will resume the inaugural session, and I would now like to request Shri Tarun Vich, Country Director, India, GAIN, to please address the audience. Please put your hands together and welcome Shri Tarun Vich. Ma'am, okay, there it is. It is. A very good morning to everybody. Honored and delighted to join you in this very important engagement in the National Conference on Millets. Let me step back and talk a little bit about placing the entire concept of millets and food in the larger ecosystem of the food systems in general. What are food systems in India and globally delivering, and what are they not delivering, and how do superfoods like millets, etc., pave the way, hopefully, for food systems to be delivering more nutrition than they are currently. So I represent the Global Alliance for Improved Nutrition. We were born in the United Nations 2002. India में हम 15 साल से ऊपर काम कर रहे हैं. We are very much part of the Indian ecosystem, working with 15 states governments and several ministries in the central government, and more particularly the Food Safety Standards Authority of India
And we are also partnering, I'm delighted to say, with more than 300 private sector industries working in the food ecosystem in the country. And this is premised कि कहीं भी हम diets का देखें, health का देखें, food system का देखें, unless private sector, the civil society, research and academia, and the governments work together, we will not be able to achieve our aims. Gain का purpose है food choices. Ultimately, आप और मैं जो खाते हैं, it is what choice we make. Food choices should be healthier, and these should be more desirable, more available, and more affordable, so that healthy food is not a luxury. Healthy food is chosen, and healthy food is available, affordable to all. I don't want to complicate life, with this complicated diagram. Suffice to say, जब हम खाने की बात करते हैं, एक तो जैसे मंत्री जी कह रहे थे, we talk about food supply chains, the production system, the storage, distribution, processing, and the retail. The other area that one needs to look at is the food environment. Food की availability क्या है, उसका physical and economic access क्या है, affordability क्या है, उसकी promotion, advertising, information क्या है, and the quality and safety and handling of that food, whether it is at home, it is in the school, is it in the workplace, or it is in the IC Anganwadi center, उस food का वो क्या है. And third is what is the consumer behavior. So when we start talking about adopting healthy diets, we need to look at food supply chains, we need to look at food environments, and we need to look at consumer behavior, and hopefully nudge all of them towards a little bit more health and nutrition, and not only calorific adequacy. And drivers पूरे दुनिया के food system में, all of us in this complicated environment, biophysical, environmental drivers are at play. Natural resources की degradation है. On the other side, there are trends in technology, many new technology, climate smart agriculture, so many things are coming. Then there are economic and market drivers, livelihoods, incomes, markets, and how they are operating. Political institutions, social culture, demographic drivers. More populations are moving from rural to urban areas. Populations, income levels are increasing, so processed food consumption going up. So many drivers impact what we eat, how we choose, and how healthy that choice is. Food systems, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था, food system जो है, हमारी diet की choice को, it shapes that choice. The agriculture production system, the food storage, transport and trading system, the food transformation, जो हम food की processing को कहते हैं, that system, and the food retail and food provisioning system. इस सारे दारोमदार में, food environment में, the consumer bases the preference, bases the time, bases the taste, bases the purchasing power, they make their dietary choice. And the idea is कि इस dietary choice को as a population, I think at all levels, we need to work together, इसको और हम healthy करें. Food systems, unfortunately, are not focused on making diets healthy. There is not enough focus on the agriculture side on foods rich in minerals and vitamins. Too much food, especially nutritious food, fresh food, is lost during transport. Food transformation processing at times low fiber, high salt, high fat and sugar, and there is heavy marketing of low nutrient foods as well. In effect, nutritious foods normally are less available, less convenient, less affordable, and less desirable. And as a consumer, I say, I have less real choice and less useful information if I want to make a dietary choice which is healthier, whether it is for myself, whether it is for my co-worker, whether it is for my child, or it is for my parent. And I think as a society हमको ये थोड़ा सा देखना चाहिए how we can create this environment where we consume healthier diets. GAIN के programs
large scale food fortification में 15 states में we reach 900 million people, and this is data I'm not shooting off the top of my head, we have the data geotagged etc. तो 15 state governments के साथ PDS, ICDS, MDM open market में हमारे fortified edible oils, fortified wheat flour और fortified milk के programs चलते हैं. But coming to commercialization of biofortified crops, which I will touch a little bit on millets today for you, that will be much more relevant to our conversation today. So, biofortified crops are developed through conventional breeding. These are nutrient-dense, naturally bred varieties of crops. They are climate smart and carry drought and heat resistant traits and boosting farmers' climate resilience. दो क्रॉप्स में हम इंडिया में काम करते हैं, बाकी अफ्रीका और अदर एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर नेबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, and the African countries. But in India, in 3 states, we are working on iron pearl millet, which is pearl millet rich in iron. ये राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये प्रोग्राम चलते हैं. Right from farmer producer organization to the aggregator and to the food processing mill and down to the consumer level. और बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में we are promoting wheat which is rich in zinc. Again, naturally bred, conventionally bred variety of the product. So, iron pearl millet, since millet की आज हम बात कर रहे हैं, high tolerance to drought and stress, daily consumption of 160 grams of this can meet 70% of our iron needs, required daily allowance for the day. Same practices for the farmer, same taste for consumer, but much, much more nutritious. So the idea is right from the seed variety to educating the farmer to ensuring कि उनकी yield compromise ना हो, उस product की taste compromise ना हो. The idea is how can we promote more nutrient dense varieties, and we are delighted and honored to start partnering with various small, medium and large food processors and mills to promote the nutrient rich varieties. And therefore the reason why we thought it's important to come on this ASSOCHAM platform और आपको बताएं कि there is so much R&D, there is so much of thought behind this that this is something that can actually expand in the country. So the idea is open market में भी किया जाए, look at the smallholder farmer and his family and ensure consumption first happens there. Then we take it to the small, medium and large enterprises and say इसको आप convert करिए. And the third is, just like in edible oil, wheat flour and milk, look at the midday meal program, ICDS program, start with small pilots in different states, but try to get them included in the midday meals as well. And so we are honored, very delighted to participate here today, and we would be honored to partner with ASSOCHAM companies and others to promote millets and millet consumption and healthier diets across India. Thank you so much. Thank you, Mr. Vich. Indeed, mainstreaming millets will make it easier for everyone to access them and will improve the diets of everyone in our country as well.